हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और रिक्वेस्ट तो बहुत सारे लोगों की आई थी इस वीडियो के लिए, बट जो इसमें से पटेल खुशबू है उसकी रिक्वेस्ट बहुत बार आ रही थी। मोस्टली हर एक वीडियो में उसकी रिक्वेस्ट आई जा रही थी। तो मैं ये 2-3 कमेंट ऊपर मेंशन कर दूंगी साइड में स्क्रीनशॉट लेकर। तो बहुत बड़ा टाइम आ गया उसकी रिक्वेस्ट को हुए, मैंने सोचा अब करूंगी तो मैंने सोचा फाइनली आज कर ही देती हूँ, क्योंकि मैंने कहा हेयर वॉश भी करने हैं तो हेयर वॉश भी हो जाएंगे और साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी पूरी हो जाएगी। और उस रिक्वेस्ट ये है कि अपने हेयर जो है पूरे डायरेक्ट नल के नीचे करने हैं और उसके बाद जो आप हेयर डंग करेंगी वो 2 या 3 मिनट तक करने हैं। अब 2 या 3 मिनट का मुझे एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता चलेगा, बट मैं ज्यादा से ज्यादा रखने की कोशिश करूंगी। और 2 कमेंट इस पे भी आए थे कि जो आप हेयर वॉश करेंगे उसके बाद जो आप हेयर ड्राई करेंगे उसको रियल साउंड में करिएगा। तो मैंने कहा चलो हेयर ड्रायर में तो इतनी क्या साउंड आनी है, जो भी होगा वो भी मैं पूरा ट्राई करूंगी। और इसमें कोई भी पानी वेस्टेज नहीं है, न हेयर वॉश तो करना ही है। अब जिसकी जितनी लेंथ होती है उतना तो हेयर वॉश होंगे ही होंगे, उतना तो पानी वेस्ट होगा ही होगा। और जो हेयर डंग करूंगी जो उसका पानी है, या तो हम कुछ ना कुछ साफ कर लेंगे, या तो बाथरूम साफ कर लेंगे, या तो बालकोनी साफ कर लेंगे। तो यहाँ पर हेयर पानी वेस्ट नहीं होने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा।